श्री सरस्वती प्राथमिक विद्या मंदिर थानागढ़ में मातृ पितृ पूजन दिवस समारोह के साथ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और आज के समय में जब युवा पीढ़ी विदेशी संस्कृति के नकल करने की ओर अग्रसर हो रही है, बच्चों में नैतिक मूल्य और संस्कार मातृ पितृ के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए मातृ पितृ पूजन जैसे आयोजन बहुत ही आवश्यक है। हर कंकु, चावल, पूजन सामग्री, आसन, बच्चे, माता पिता, दादा दादी जैसे सामग्रियों के साथ मातृ पितृ पूजन के लिए विद्यालय परिवार में 350 लोग उपस्थित रहे। यह प्रधानाचार्य राजेंद्र गुरुजी के मार्गदर्शन में प्रबंधन स्तर पर मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। मातृ पितृ कार्यक्रम में कक्षा 5 के बच्चों ने राम दीदी के मार्गदर्शन में आज की पीढ़ी को वृद्धाश्रम में धकेल रहे माता पिता के लिए एक सुंदर नाटक प्रस्तुत। नमस्कार, मारू नाम नीतलबेन छे। मारो पुत्र श्री सरस्वती विद्या मंदिर शाला में पहला धोरण थी भणे छे। अत्यारे 7 वर्ष पूरा थशे एने, पण आ स्कूल खूब सरस छे। स्कूलनो अनुभव घणो सारो छे। मारे स्कूल में अवनवी प्रवृत्ति, अवनवी परीक्षा, रमत गमत जेवी घणी बधी करवामां आवे छे प्रवृत्तिओ, अने उत्सवो पण घणा करवामां आवे छे, जेम के नवरात्रि, मातृपितृ दिवस जे आजे अहींया उजवो छे। खूब सरस आयोजन कर्युं हतुं, अमने बधाने खूब मजा आवी, खूब सरस हतुं बधुंय। नमस्कार। आज रोज सरस्वती प्राथमिक विद्या मंदिर थानगढ़ना आंगणे पाश्चात्य संस्कृतिनी सामे आपणी संस्कृतिनुं रक्षण थई शके, माँ बापनुं महत्व अने एना उद्देश्यो जळवाई रहे, आपणी सनातन संस्कृति आज पेढ़ी दर पेढ़ी आगळ वधती रहे अने तेनुं जतन थाय अने जाळवणी थाय के उद्देश्यथी शाळा परिवार द्वारा आज रोज मातृपितृ पूजन कार्यक्रमનું आयोजन કરવામાં આવેલ, જેમાં 300થી વધારે વાલી ઉપસ્થિત રહેલા અને પૂજન વિધિનો લાભ લીધેલો। સાથે સાથે ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમ પણ હોય, વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવેલા। આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા શાળાના પ્રધાનાચાર્યના માર્ગદર્શન મુજબ શાળા પરિવારે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા ખૂબ સારી એવી મહેનત કરી છે। અસ્તુ, વંદે માતરમ, ભારત માતા की जय। મારું નામ ખુશી હિતેશભાઈ ગોસ્વામી છે। હું ધોરણ 6 માં ભણું છું। મારી શાળાનું નામ શ્રી સરસ્વતી પ્રાથમિક વિદ્યા મંદિર છે। હું આ નિશાળમાં ભણું છું। મારા દીદી ગુરુજી અમને સારી રીતે ભણાવે છે, સારું સંચાલન આપે છે। અમારી નિશાળમાં સારા એવા કાર્યક્રમો ઉજવવામાં આવે છે, જેમ કે માતૃપિતૃ પૂજન, 26મી જાન્યુઆરી જેવા વગેરે કાર્યક્રમો ઉજવવામાં આવે છે। ધાર્મિક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો એવું બધું ઉજવવામાં આવે છે। અસ્તુ, નમસ્કાર।